Yeah, and you know she does, right? She sees something, I went there. I'm like, what happened? And then 10 minutes later, when he finally gets in, he's like, oh! And everyone's like, Ritesh, why are you laughing? I just got it. I'm kidding. I'm kidding. That's not how it goes. Yeah. Okay, I'll rate him now. 1. Because you see him right. How to? He's my son. Yeah, lovely. Ritesh number 1. No, but also he's very funny in the movie too. He's very funny in the movie. And sometimes I wouldn't even know how to react to him because he's making all these faces. You know, I've never like worked with someone that's so expressive before. And then actually when I was dubbing, the moment when I really appreciated his humor, like really full on in all its glory, was the climax scene around the dinner table. Because then for that was the day when I could sit opposite you and we didn't do too much talking, we were observing. It was really nice. Okay, so 3 cuss words that you use very often. Me? Maafi mummy. Okay. You tone it down because... No, it I'll tell you how it goes. So, Maafi mummy. I was just going to say Pyar Ki Maki. Can you sing the song? Okay, 5, Okay, 6, fine, together. 7, 5, Pyar Ki Maki, Pyar Ki Maki. Words. We'll have subtitles for you, don't worry. Yeah, I'll make sure that I do that. There we go. Whoa. Thank you. Okay, so this is another small game that I'd like to play with you. It's called Never Have I Ever. Never have I ever. What would you do? I will do. So I'm gonna ask you something like never have I ever done this, post a signature. So you have to say no. If you haven't, then you say never have I. And if you have done it, so you have to say I have. Okay. We have to. Never have I. Never have I ever. Never have I ever, and Never have I ever. yes I have. Okay. So never have I ever used a pickup line. Never. Never. Okay. No, I have. Very moist. It's like wet. It's super moist. हेलो ठीक है Got me all dressed up and then most of the interviews this morning. No, that's okay. I think you should print this. I'm not getting ready. Not ready. It's Hey! I thought I was going to be ready. It's very like with you. So good. Very intense. I didn't feel Very intense sexual face you're making there, Ritesh. Ritesh pondering. Ritesh pondering. He made it in. I'll crop it. I'll crop you out. Yeah. Ask us, sorry. रितेश फिल्म का नाम हाउसफुल है Oh God. तो आपने अपनी करियर में बहुत सारी फिल्में की है तो कमर्शियल सक्सेस कितना मायने रखता है अगर मतलब आपको पर मालूम चलता है कि आपकी फिल्म में हाउसफुल टैग लगा हुआ है तो कितनी खुशी मिलती है एज एन एक्टर नहीं फिल्में करते ताकि वो पिक्चरें चले कमर्शियल किसी भी फिल्म में जब पैसा लगता है तो कॉमर्स आता है और आप थिएटर में अगर फिल्म रिलीज करते तो इसी के लिए रिलीज करते हो ताकि लोग जाकर देखें और फ्राइडे हो कोई भी शो हो कि बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगे तो यस बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड व्हाट अबाउट यू हाउ फार द कमर्शियल सक्सेस ऑफ फिल्म मैटर्स टू यू एज एन इंडिविजुअल Am I about to say the wrong thing now after that answer No, you she just don't. gave? No, it very much does matter in the sense that obviously you want the film that you've worked very hard on to do well. But at the end of the day, I feel like if everyone does their best, then after that there's no point worrying too much about it. But am I supposed to say that? No, say whatever you want. Yeah, because you were just like, yes. No, that's okay. It does. I mean, of course, it's. I mean, a commercially successful film is a successful film in many ways. So, I mean, it's nice when it does well, but you can't take it personally if it doesn't. I It's agree not with anyone's individual responsibility. It's a collective, you know. एक्टर के तौर पे अलग अलग तरह के मतलब इमोशनल रोल रोमांटिक रोल लेकिन आपको लगता है कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है मतलब जो ह्यूमरस रोल होता है वो करना सबसे डिफिकल्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मुझे लगता है कि हर रोल के चाहे वो कॉमेडी हो एक्शन हो ड्रामा हो रोमांटिक हो हर रोल के अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज होती है अपनी अपनी सिंप्लिसिटीज़ होती है
तो ऐसा होता नहीं है कि एक रोल दूसरे रोल से ज़्यादा आसान है या करना आसान है. देयर आर एवरी रोल हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज. कभी कभी कोई सीन आसानी से हो जाता है, डिफिकल्ट सीन, कभी कभी सिंपल सीन भी बहुत वक्त लग जाता है. तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू डूइंग. जैसे आपने बताया कि मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिकली देखा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि डिफिकल्ट नहीं होता है. आपने कहा कि क्या एक रोल दूसरे रोल से ज़्यादा आसान होता है. मैंने कहा कि हर एक रोल अपने हिसाब से कुछ दिन में आसान होता है, कभी डिफिकल्ट होता है. तो ऐसा नहीं है कि एक रोल दूसरे रोल से ज़्यादा डिफिकल्ट हो. आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करना है, आपने एक विलन में इतना अच्छा मतलब जी, कोई किरदार निभाया, नेगेटिव थैंक यू, रोल निभाया है. थैंक यू. तो वो जो किरदार निभाया था, जी. आपने पास में सिर्फ ह्यूमरस रोल्स बेसिकली जी, किए थे. जी. तो वो कितना आपको मतलब चैलेंजिंग था? नहीं, चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि क्या लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे. क्योंकि मैंने हाउसफुल की है, मस्ती की है, तो एक इमेज सा बन जाता है कि ये स्क्रीन पे आएगा तो प्रॉब्ली विल डू समथिंग फनी. पर जब आप एक सीरियल किलर की भूमिका निभा रहे हो और आपको कन्विंस करना है लोगों को कि यू सीरियस अबाउट व्हाट यू डूइंग, तो यस, डिफिकल्टी यही थी कि क्या लोग कन्विंस हो पाएंगे. और बाकी रहा सवाल परफॉर्म करने का, तो देयर वर थिंग्स दैट वर न्यू टू मी, न्यू टू एनीवन, क्योंकि आप एक सीरियल किलर की भूमिका कर रहे हो. उतना संभालना थोड़ा मुश्किल था, बट इट वाज फन, एक्साइटिंग. What you're saying, doing the humorous role is more difficult than doing any kind of the role, emotional or romantic or I've actually, because I'm quite a new actor, I've never done a romantic role before. In fact, the last 3 films that I've been in have been comedies. So for me, it's a genre that I very much enjoy doing. Again, like Ritesh said, I don't think you can pick a genre as being more difficult, one being more difficult than the other. I think each one comes with its challenges. But comedy for me so far has been the most fun, just from the angle of watching it unfold in front of you is always a good time and it's a laugh. And working with people that understand the genre so well, I think, is also really a privilege. And you know, it's like having a little step up in the game. Your girl. हाउसफुल 1, 2 अब 3, हाउसफुल 3, तो आप क्या समझते हैं इस फिल्म का मेन यूएसपी क्या, लोगों को क्यों अट्रैक्ट करेगा रिलीज होती है? नहीं, क्या था कि हाउसफुल जब बनी थी तो हमने सोचा नहीं कि हाउसफुल 2 बनाएंगे. जब वो चली, लोगों को पसंद आया और एक रिकॉल वैल्यू था कि चलो लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग बिगर. तो बहुत एक टैगलाइन था, द डर्टी डजन. तो 4 हीरो, 4 लड़कियां और 4 पिता, ऐसे बनकर वो हम लोगों ने फिल्म बनाई थी, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही. उसके बाद देन हाउसफुल 3. तो मुझे लगता है कि यस, कभी कोई अगर एक फ्रेंचाइज बन जाता है और वो चलने लगता है, लोग पसंद करते हैं, तो उसका एक एडवांटेज तो होता ही है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप क्या कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आप वही चीज़ अगर आप दोबारा लेके जाएंगे लोगों के सामने तो बोलेंगे यार मज़ा नहीं आया, पर उसमें अब नया क्या करोगे, ऐसा क्या नयापन है. तो यस, नयापन उसमें यह है कि अभिषेक बच्चन है, नयापन यह है कि लीसा है, नरगिस है. ये तीनों नए हैं इन अ न्यूअर स्टोरी. Lisa, you're out of Hindi film industry, जो language is good, English language, that too fluently. So do you feel it difficult to work in a Hindi movie as such? No. A long time. To be honest with you, I do understand the language, and when you come to set, it's very important that you know your dialogues. I also know my co-stars' dialogues, and so within the framework of making a film, I don't usually find my Hindi is a problem. However, when I give interviews, I get a bit shy to speak the language for fear that I'm going to say something really goofy, and then you're all going to laugh at me. No, I want to say, because having worked with her, क्या है कि इनकी लैंग्वेज बहुत साफ है. इन्होंने खुद डब किया था, आप देख लेंगे फिल्म में भी. इनको सारी लाइंस और सभी पता है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि इनकी परवरिश देश के बाहर हुई हो, लेकिन इस फिल्म में भी कैरेक्टर वही है. तो इनको कहा गया था जानबूझकर के जस्ट बी योर सेल्फ एंड से द वे यू वांट टू से इट. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभी मुझे लाइनें याद रहना मुश्किल होता था. शी यूज्ड टू नो माय लाइंस एंड हर ओन लाइंस आल्सो. सो आई थिंक दैट क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू देम, क्योंकि इतनी मेहनत ये सभी लड़कियों ने की है. दे आर वंडरफुल इन द फिल्म. Lisa, all the leading ladies, Deepika Padukone, Priyanka Chopra, making their international debut as such, working in an international project. So do you have any preference working in an international project or a Hindi movie as such?
Well, I can't have a preference at this point because I haven't worked in an international project. But I mean, if something came my way, of course I would love and embrace that opportunity. I've watched those kinds of films and I love watching TV shows. So one of the reasons I like doing comedy is because I enjoy watching comedies. So whatever I enjoy watching, I think you also want to be in as well. No? रितेश लीड रोल में भी काम किया आपने और भी सारे एक्टर्स के साथ काम किया. When you work in लीड रोल आपको लगता है कि ऑडियंस ज़्यादा मतलब आपकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को मतलब शोकेस कर सकते नहीं, ऐसा होता नहीं है. एक जॉनर की बात होती है कि कौन सी फिल्म में और क्या स्टोरी है. तो अगर आप ऐसा मान के चलते हो कि हाउसफुल जैसी फिल्म है जहाँ 3 एक्टर्स है, 3 हीरोइंस है, इसमें जगुदा है, बमन इंद्रानी, तो ये सारे एक्टर्स को जस्टिफाई भी करना पड़ता है 2 घंटे के स्पेस में. सो येस ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, बट दैट्स द जोन इट इज. बैंजो हो तो यू आर डूइंग इट अलोन, बट अगर एक विलन है तो इट्स 2 ऑफ देम अलग है. तो आई थिंक इफ यू ट्रू टू योर वर्क ना, 2 घंटे भी आप बोर कर सकते हो या 10 मिनट में भी चमक सकते हो. यू शुड बी more dedicated and true to what you're performing. अक्षय से आपके काफी पुराने मतलब ताल्लुकात हैं, तो अच्छे एक्टर थे, अच्छे इंसान मेरे इनका भी ऐसा हुआ कि जब रोल की बात आती है तो वो अपने रोल को प्रेफरेंस देते हैं. ऐसी कोई बात है मतलब किसने बोला आपको? मतलब समटाइम्स न्यूज़ में आते हैं कि कौन से न्यूज में ऐसा होता है? आई एम आस्किंग फ्रॉम योर साइड सर. Really? No, I missed out on the no. question. So he's asking me that if you're working with Akshay, he gives preference to his own roles over the others. But I guess such an unfair question ना कि आप कहीं पे सुनोगे फिर आप एक एक्टर को पूछोगे कि क्या सही है क्या गलत है. You should ask Akshay this why question. don't you ask Akshay? Yeah, go ask Akshay. आपने पूछा अक्षय? आप हाँ क्यों? I mean because I mean Tell me. If you're asking me, na, I'll answer this question. But have you asked Akshay this question? I haven't asked. But will you ask him? I really can ask. Not I can. Will you ask him this? But will you ask him the next time you interview him? Yeah, I mean it's not like true or false. I mean आप पूछोगे? I don't know the inside thing or the तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? because you work with him, so तो will you ask अक्षय कि आप खुद के रोल को प्रेफरेंस देते हो कि नहीं? I mean it depends. I mean, नहीं. हाँ. I guess. No, I'm not asking you to ask. From all these posters that I see here, I see Ritesh and Akshay together in equal No. measure. So I'll tell you what. कि क्या होता है ना? I have worked with Akshay in 4 films now. Okay, I have had no such issues. More than that, Akshay himself has improvised lines and scenes where he thinks, take this line. He's given his lines to me. So it's really unfair to ask a co-star this question कि अक्षय खुद के रोल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्या? Yes, आप ये सवाल मुझे पूछिए, मैंने अभी जवाब दे दिया है, लेकिन इफ़ यू थिंक कि यही सवाल आप अक्षय से भी पूछोगे तो मुझे पूछिए, नो प्रॉब्लम. Talking about your relation with your co-stars, how was the relation during the shoot? All the Abhishek is there, all our pranksters, be it Ritesh, be it Akshay, be it All are pranksters for sure. Not at all, not me. No, Ritesh has really become a prankster. He's really grown into a proper prankster. Not at all. I just told the last lady by the 2nd or 3rd week into the shoot, Ritesh couldn't even say good morning to me without me going, what have you got there? No, that's a fear. That's your fear, not because I was a prankster. No, that's because you were a prankster. No. It's because in week 1, a prank was played every day. And lastly, asking about the future group besides Houseful. That was- Beyond Houseful, Banjo, Grand Masti, which are going to release now, and Bangchor. I'm doing a Marathi film called Mauli, and then I'll start working on Chhatrapati Shivaji. I'm going to start shooting for India's Next Top Model, actually. Sorry, it's not even a film. How amazing is that, yeah? It's Second amazing. season, right? Yeah, Lovely. thanks. You think I can participate? Or come as a judge one day? Can you please? Yeah, call me. No, you're not actually going to I'll make come. yourself free. Will you really come? Yeah, I'll come. Proper, you'll come? I don't know, will but- call you. Yeah, but I don't know how to judge a model, but you tell No, me. you will learn. It'll be Yeah. funny. It'll be a funny episode. Yeah. You can Why judge not? the models. You can judge the models.